अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेबी बोर्न विद डायबिटिक मदर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन अकर टू द बेबी। बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। डायबिटिक मदर को बेबी बोर्न हुआ है, सो बेबी कैन डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अ बॉय हैज gotten cut on the finger which of the following is initial mediator, that is prostaglandin is initial mediator। अब पेन को मीडिएट करता है ब्रेडिकाइनिन देन प्रोस्टाग्लैंडिन, फीवर को IL-1 एंड TNF, vasodilation को prostaglandin F2, E2 and D2। So you have to memorize these things। which of the following drug causes thrombocytopenia, मतलब प्लेटलेट लो हो जाएंगे, that is quinidine। quinidine causes thrombocytopenia। Next question is a nerve supply to the vulva is pudendal nerve। pudendal nerve सप्लाई करती है वेल्वा को। ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज patient wants analgesia for pain-free labor. What will you give to the patient? That is nitric oxide। nitric oxide patient को देंगे। Another one is common to glucagon and epinephrine is answer is glycogenolysis of the liver skeletal muscle। Bitemporal hemianopia is caused by the lesion in middle optic chiasma। बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया मिडिल ऑप्टिक काजमा में लीजन की वजह से होती है। नेक्स्ट वन इज अ यंग बॉय प्रेजेंट इन द ओपीडी कंप्लेन ऑफ गायनेकोमास्टिया लॉन्ग लेग्स हाइपोगोनेडिज्म। कौन सी कंडीशन इज मोस्ट लाइकली हो सकती है? दैट इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कैन हैपन टू द बेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रेग्नेंट लेडी 5 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एमनोरिया ओपीडी में आती है। शी इज डायग्नोज्ड ऑफ जर्मन मीजल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जर्मन मीजल्स? कॉम्प्लिकेशन जर्मन मीजल्स की बायलेटरल कैटरेक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। रूबेला इन द प्रेगनेंसी बेबी को कैटरेक्ट हो सकती है। और उसके अलावा 7th वीक में भी कैटरेक्ट एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 7th वीक डेफनेस विल बी देयर। Another question is superficial inguinal ring is formed by external oblique aponeurosis। Superficial inguinal aponeurosis। Okay, another one is superficial inguinal ring and deep rings are anatomical landmarks passage at the lower abdomen। Deep ring located 1.2 cm above midpoint of inguinal ligament। Deep inguinal ring opening are transversal is fascia, deep abdominal wall layer, entry point into the inguinal canal। Structure passes in male spermatic cord and female round ligament of the uterus। Another one is superficial inguinal ring just above the pubic tubercle is located. Opening are external oblique aponeurosis. Functions as exit point of the inguinal canal. Structure emerge same as depend on the gender. And clinical correlations, inguinal hernia often occurs in the abdominal content produced through these ring। Indirect inguinal hernia are through deep ring. Direct hernia passes through the weak spot of the medial to the deep ring। So that is the difference between deep ring and superficial inguinal ring। Now we will be compare deep inguinal ring 1.25 cm above midpoint of inguinal ligament, while superficial ring just above pubic tubercle। Deep inguinal ring has location. Deep inguinal ring, which layer of abdominal wall will be there? Deep ring will be